Good morning, students. Our today's topic is outbreeding devices, page number 31 of your NCERT book. Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers, and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Hermaphrodite flower means in which male and female sex organs are present in the same flower. So their chances are more that pollen grains from the same flower will fall on the stigma of the same flower. Continued self-pollination results in inbreeding depression. This is the disadvantage of self-pollination. It causes inbreeding depression. Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. So what are the devices? Number one is, in some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. कुछ species में अभी पोलन पहले बन गए और अभी स्टिग्मा नहीं तैयार हुआ, तो दोनों में रिसेप्टिविटी में दे आर नॉट सिंक्रोनाइज, एक ही टाइम पे दोनों मैच्योर नहीं हो रहे. आइदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा becomes receptive or the stigma becomes receptive much before the release of pollen. उनमें से कोई पहले मैच्योर हो जा रहा है और किसी की रिसेप्टिविटी बाद में आ रही है. तो this is one of the method to prevent self pollination. Second point is, in some other species the anther and stigma are placed at different positions. उनकी positions different हैं कि वो अपने ही pollens अपने ही stigma पे fall नहीं कर सकते, so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. Both these devices prevent autogamy. Autogamy means self-fertilization. The third device to prevent inbreeding is self-incompatibility. Self-incompatibility है कि कुछ species में ऐसी property है कि अपने ही stigma, अपने ही anthers, अगर अपने ही पोलन ग्रेन्स अगर वो अपने ही स्टिग्मा पे फॉल करेंगे तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, वो उस मैच्योर नहीं हो पाएंगे, वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर मैच्योर नहीं हो पाएंगे. दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल. तो ये एक मैकेनिज्म है कुछ स्पीशीज में जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है. अगर अपने ही पोलन ग्रेन्स उस पर फॉल करेंगे तो वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं करेगी. नेक्स्ट पॉइंट है, अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स ओनली वन सेक्स इज प्रेजेंट इन अ फ्लावर. इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, it prevents autogamy but not geitonogamy. Geitonogamy means when the pollen grains falls on the stigma of the another flower of the same plant. Here in geitonogamy, plant is same but flower is different. In several species such as papaya, male and female flowers are present on different plants. So in papaya, plants are also different. Male plant is different and female plant is different. That is, each plant is either male or female. This condition is known as dioscy. This condition prevents both autogamy and geitonogamy. Geitonogamy means on the same plant, because on one plant only one type of flowers are present, so it prevents autogamy also and geitonogamy also. Next is pollen pistil interaction. Pollination does not guarantee the transfer of the right pollen compatible pollen of the same species on the stigma. During pollination, any pollen grains can fall on the stigma. Often pollens of the wrong type, either of the other species or from the same plant which is self-incompatible, also land on the stigma. अगर किसी दूसरी स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे फॉल कर जाएंगे तो वो पोलन ट्यूब वो जर्मिनेट नहीं करेंगे, पोलन ट्यूब नहीं आएगी और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. तो अगर फर्टिलाइजेशन लानी है तो पोलन ग्रेन्स सेम टाइप की स्पीशीज से ही होने चाहिए. द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज़ ऑफ राइट टाइप और ऑफ रॉन्ग टाइप. स्टिग्मा के पास में एक पिस्टल का पार्ट है स्टिग्मा. स्टिग्मा में एक कैपेबिलिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि दीज पोलन्स आर ऑफ राइट टाइप और रॉन्ग टाइप. राइट मीन्स वेदर इट इज़ कंपैटिबल, वो उसको आगे फर्टिलाइज कर पाएंगे, या incompatible. If it is of right type, the pistil accepts the pollen and promotes
post-pollination events, that is leads to fertilization. If the pollen grains are of right type, it leads to fertilization. If pollen is of wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style. अगर पोलन ग्रेन्स रॉन्ग टाइप के हैं तो पोलन ट्यूब भी जर्मिनेट नहीं करेगी और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी. द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil. ये कैसे होता है? जैसे पोलन ग्रेन्स पिस्टल पे गिरे उसके स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी तो पोलन कुछ केमिकल रिलीज करेंगे. तो इस तरह से दोनों में एक डायलॉग चल रहा है, इंटरेक्शन हो रही है, बातचीत हो रही है. अगर वो राइट टाइप के होंगे तभी पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे. This dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to the recognition, followed by acceptance or rejection. अगर वो राइट टाइप के हैं तो वो उसे एक्सेप्ट करेगी, अगर वो रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन फॉल कर जाएगा स्टिग्मा पे तो उसको रिजेक्ट कर देगा स्टिग्मा. As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. Germ pore कौन से थे? पोलन ग्रेन के बाहर दो लेयर्स हैं, इंटाइन और एक्साइन. एक्साइन में एक टफ सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन. एक्साइन में कुछ प्लेसेस पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, दैट पार्ट इज नोन एज जर्म पोर. उस जर्म पोर से पोलन ट्यूब इंटाइन का बाहर आती है और वो एक पोलन ट्यूब बना रही है. तो वो किसी एक जर्म पोर से पोलन ट्यूब बाहर आती है ताकि उससे मेल गैमीट ओव्यूल तक जा सके. द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी. जब वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर गई तो वो अब अपनी नीचे ओवरी तक पहुंच जाएगी. You would recall that in some plants pollen grains are shed at two-celled conditions that we have already studied. जो pollen grains हैं वो दो सेल स्टेज पे शेड होते हैं. one cell is known as vegetative cell and the other cell is known as generative cell. In such plants the generative cells divides and forms the two male gametes during the growth of pollen tube in the stigma. इन प्लांट्स में क्या है, फिर वो जनरेटिव सेल के अंदर मेल न्यूक्लियाई है, वो फिर माइटोसिस करेगा और दो मेल गैमीट्स बना लेगा. ये दो मेल गैमीट क्या होंगे? उनमें से जो फर्स्ट होगा वो एग के साथ में फ्यूज़ कर जाएगा और जो सेकंड मेल गैमीट है वो हमारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म बनाएगा. ये हमने पहले ही पढ़ लिया है. इन प्लांट्स विच शेड pollen in the three-celled condition, pollen tube carry the two male gametes from the beginning. Pollen tube, after reaching the ovary, enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergies through the filiform apparatus. Pollen tube पहले माइक्रोपाइल एंड से अंदर जाएगी, वहाँ से फिर सिनर्जिड के पास जाएगी. सिनर्जिड में फिलीफॉर्म अपरेटस है जो उसको गाइड करेंगे एग की तरफ. वहाँ से जाकर पोलन ट्यूब फिर एग के साथ में फ्यूज़ कर जाएगी और एक मेल गैमीट एग के साथ में फ्यूज़ हो जाएगा. इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन. Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropyle part of the synergid guides the entry of pollen. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enters the ovule are together referred as pollen-pistil interaction. This definition is important. What is pollen-pistil interaction? All the events from pollen deposit on the stigma until pollen tube enters the ovule are termed as pollen-pistil interaction. All these events from pollen deposition, that clear. As pointed out earlier, pollen-pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollen. Either अगर पोलन सेम टाइप के हैं तो प्रमोट करेगा इसको पोलन ट्यूब को, और अगर डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स हैं तो उसको इनहिबिट करेगा. The knowledge gained in this area would help the plant breeders in manipulating pollen-pistil interaction.
even in incompatible pollinations to get desired hybrids. तो अभी many fields में जो undesirable pollens को भी से pollination करवा के एक desired hybrids produce किए जा रहे हैं. You can easily study pollen germination by dusting some pollens from flowers such as pea, chick, crotalaria, balsam and vinca on a glass slide containing a drop of sugar. After about 15 to 30 minutes, observe the slide. This practical we will do afterwards. As you shall learn in the chapter on plant breeding, a breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. Next is, what is artificial hybridization? It is one of the major approach of crop improvement program. In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination, that is from unwanted pollen grains. This is achieved by emasculation and bagging technique that we will study next time, what is emasculation and what is bagging. So artificial hybridization is a technique in which we put the desired pollen grains on the stigma. जो हम चाह रहे हैं वही pollen grains को उस stigma पे डालकर crossing करवाएंगे. So that I will explain you next time. Thank you.